पहले आपकी तरफ ही रुख करता हूँ क्योंकि ये आप ही ने सिखाया है कि हमें थोड़ा ऐसी मार्केट्स में पेशेंस की ज़रूरत है। कितना डाउन साइड है वो देख लें, क्योंकि अप साइड तो कोई कैप्ड है नहीं। ये जो मार्केट में अब वापस $120 का क्रूड, 95 का डॉलर रुपी, क्या वापस मैक्रो ख़राब हो रहा है? वो मार्च वाली हालत वापस तो नहीं आ जाएगी मार्केट की? देखिए मार्केट तो कहाँ जाएगा वो शायद आप लोग को ज़्यादा मालूम अच्छे से होगा, लेकिन मतलब $120 इज अ कंसर्न। शॉर्ट टर्म वेदर इट इज, अभी ऐसा लगता है कि द वे इट इज बीइंग पिक्चर्ड इज कि भाई ये गल्फ ऑफ होर्मुज़ का जो ब्लॉकेड है फ्रॉम बोथ साइड्स, ये मतलब इट विल बी नेगोशिएटेड विद इन डेज। आई मीन अच्छा, इट इज़ नॉट अ ओनली प्रॉब्लम फॉर इंडिया दैट वी एम ओनली एनर्जी इम्पोर्ट। हमारे से ज़्यादा हालत खराब और बहुत सारी कंट्रीज़ की है। इवन अमेरिका इटसेल्फ विल फेस अ प्रेशर, बट दे आर नेट एनर्जी एक्सपोर्टर, तो उनको उतना नहीं पता, दे हैव मच मोर रेसिलेंस। बट ऐसा मुझे लगता है कि इट इज़ अ मच मोर टेम्पररी फेनोमेनन, एंड डिस्पाइट दैट इट इज़ डैमेजिंग। The loss of production of oil in that all those countries is running into 500, 600, 700 million barrels cumulative now. So I think one, it is right now unaffordable. Second, it will have lasting damage into the quarter. I mean, going forward, even if the whole thing is settled tomorrow or something like that. So yes, it is a short term or maybe even quarterly or for the year 26, 27 has started very badly. Earnings are looking up for the quarter, but obviously it will give in as we go forward. So it is a challenging quarter and year we have started with. रामदेव सर, आपको मार्केट में 4 डेकेड्स हो गए हैं ना। हमने फेजेस देखे मार्केट में। गल्फ वॉर आई थी, उसके बाद वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बीच में उससे पहले .com का बबल और उसके बाद का रिसेशन, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 की कोविड की डिक्लाइन। इस वाली मार्केट की जो वीकनेस है उसमें एक फ़र्क है कि ये मैनमेड है। ये अब तक जितने भी थे उसमें कुछ भी मैनमेड नहीं था, एक नेचुरल फिनोमिनन थे या कुछ भी था मार्केट्स में जो भी था। ये जो एक डोनाल्ड ट्रंप की पूरी रणनीतियों की वजह से, पहले टैरिफ, उसका पूरा टेरर, और उसके बाद ये जो वॉर हुई और उसकी वजह से कच्चा तेल जो $60 पर कंफर्टेबल था हमारा 120 पर आ गया। ये शायद आपके लिए भी पहला एक्सपीरियंस होगा, तो ऐसे में कुछ आपने इस पर स्टडी की है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट पर, और आगे अभी तो 2 साल रहने वाले हैं। You can't study. See, when very powerful country like America, which owns maybe 55-60% of the global market cap, I'm going by the wealth rather than economic, or population and things like that. So they have a huge responsibility to run the world, run the world in a very responsible and ethical way. But right now it looks like it is becoming jiski lathi uski bhais type, I mean, wherever I can bargain, China is bargaining for the rare metals, Iran is bargaining for Gulf of Hormuz, America is bargaining for the tariffs, we are the consumer of the last resort. So ये जो attitude जो आ रहा है world में, I don't know what it will do longer term, So I think those are the real, and the trend has to be set by the rich and big guys. Like America, China, they are the 2 big powers. They have to show the way that you have to behave in proper way. So we look forward to whatever they do, but right now things are not looking good. And it will have a huge repercussion in the short term as well as long term. अच्छा, मैं काफ़ी एक एनालिसिस सुन रहा था कि जो पिछली बार हम क्रूड $120-130 पर गए थे, जो 2006-7 में है, उसका मैक्रो पर इम्पैक्ट, और आज की डेट में क्योंकि हमारी इकोनॉमी का साइज 4 गुना हो चुका है वहाँ से, आज के उसमें कितना इम्पैक्ट है। आई एम श्योर आपकी रिसर्च टीम काफ़ी शानदार है। आपने कुछ एनालिसिस किया है कि अगर लंबे समय तक क्रूड 110-120 के करीब रहा तो कितना इम्पैक्ट GDP पर और कितना इम्पैक्ट अर्निंग्स पर आ सकता है? I have not seen my research, but I have seen whatever globally we have read things. See, there is other side of the thing is that if the oil remains at 125, 130, a lot of consumption destruction will happen, because finally governments will pass on the burden to the consumers, and then suddenly you will find that you cannot afford to fly. 20% decline in the air traffic. 20% decline in the, why auto shares are weak despite the volume goes to 25-30%, purely because if the petrol diesel prices are hiked by 25-30%, there will be knock on that is what is the fear of the market, is that there will be volume challenge. Interest rates are being raised, money supply is being constrained, so economic managers will manage as the difficulties they become more permanent, and that is definitely not a good news in the sense that in all possible ways, and I don't know what all
but it will be what I call, I would say it will slow down the growth, growth of most of the companies, particularly which are domestic oriented. So I don't think there is any good news in this. The only good news is that it is expected that it is not permanent. बिल्कुल. And that's why the markets are very resilient and markets are remaining hopeful that आज नहीं तो कल ये बंद हो जाएगा. Because it's all man-made. I mean, one guy is writing one letter that okay, I'm feeling very nice in the morning and we have Gulf of Hormuz open and all the ships are going through. And so, I mean, we are waiting for that day. But hopefully it is quick, but it is damaging. It has damaged already. बिल्कुल. और रामदेव सर असल में एक और बिल्कुल आपने सही बात कही. ये उस समय आया जिस क्वार्टर में हम एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीएसटी कट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, बेनिफिट आएगा और वो दिख भी रहा है. एक्चुअली लीवर के नंबर्स देखें, आप नंबर्स देखें, लेकिन स्टॉक रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कैसे करोगे? मतलब एक तरफ तो टेलविंड है, दूसरी तरफ हेडविंड है. See, the tailwind of volume has come, but the headwind of cost has come now. So one is not able, market is not able to figure out whether how much to build, what way. But my sense is that in consumer companies which were stagnated for 5-7 years in terms of volume growth, now finally we are seeing revival of volume, which is very good. I mean, which should be much more sustainable. But if the inflation or something eats away the resurgent spending power, then we'll have a problem. But otherwise, I think. I mean Nestle, Lever की आज की volume so growth I think बिल्कुल. And all the automotives they are at 25-30% volume growth. I think except for this Iran war, we are in a very good footing. नहीं, आपने एक और अच्छी बात कही कि मार्केट में रेजिलियंस है. अगर आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप 2.5 साल से कोई रिटर्न्स नहीं बने थे वहां पर. वहां पिछले 1 महीने में हमने बहुत शानदार एक रिवर्सल देखा है. काफी लोगों के पोर्टफोलियो रिपेयर हुए हैं. वो लग रहा है आपको कि और आगे चलेगा, कंटिन्यू करेगा वहां पर? आई डोंट नो अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक्स, बट मेरे को ये क्वार्टर में तो अर्निंग्स का तकलीफ दिख रहा है. आई मीन डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग दिस गोज ऑन, सो इट माइट, बट देन यू नो मार्केट्स आर नॉट अबाउट नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर. If the gets resolved, जैसे UAE has left OPEC. This time oil crash will not be 120 to 60, it will be 120 to 40. Okay. So that kind of thing. It will be vertical drop, it will be waterfall. But अभी वो डेट मेरे नहीं मालूम कभी होगा, बट होगा तो वाटरफॉल ही होगा. सो दैट इज व्हाट वन इज होपिंग, बिकॉज द मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू बी कैलिब्रेटेड लाइक दैट. सो दैट इज व्हाट इज द होप. बट आई थिंक अदर साइड यू हैव द पॉलिटिकल डेवलपमेंट हियर वेयर ईस्टर्न इंडिया फाइनली could see light of the day, because it's a 1/3 of the country with a 1/6 of the GDP. So if by chance there is a I mean the mandate we are seeing polls on 4th exit poll, if that becomes reality, you see a completely new set of economic actions coming from Eastern India, because West Bengal is not just a state. It is a that chicken neck. What is that called? Chicken neck. So it is a gateway to entire Eastern Northeast and जहाँ काफी डेवलपमेंट हुई है वैसे. Yeah, but because of this blockade, I mean the choke point. Now, if that opens up, I think it opens up the massive possibilities. So let's wait. Let's keep our positive news close to chest till 4th. But what I'm hearing. That is a damn good मंडे को अगर बीजेपी जीत गई तो एक बार के लिए तो मार्केट सलामी देगा उसको, आपके हिसाब से? It's not a short term development. I think the real benefit, economic benefit will come in the longer run. Okay. But announcement will start happening. रामदेव जी, एक मार्केट में एक जैसा आपने बोला कि अब ये वाला क्वार्टर फिर थोड़ा सा अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर थोड़ा सा दिक्कत वाला आ जाएगा, लेकिन इस समय फिर जो मैं आपको सुन पा रहा हूँ, क्या ये सही होगा कि हम उन कंपनीज पर फोकस करें जो अभी कुछ समय के लिए महंगे तेल की वजह से प्रॉब्लम में आएंगी, लेकिन जैसे आपने बोला कि वो 120 का जब 40 आएगा, आपको उस समय मौका शायद ना मिले, तो उनमें अभी से आप एक्यूमुलेट करना शुरू करें? क्या ये एक अप्रोच होगी? It is giving you buying opportunity, I would say. If despite everything I know that it is growing at 25%, but I get at 20p or 21p because market is bearish on whatever, because of these developments, I will take my calibrated call. Okay, I may see a 10% decline, but on 3-year basis. This is not a 3-year basis problem. I'm very clear about it. Okay. This problem is a quarterly problem. So I have no idea how it is going to end up in next one quarter. But after that, डर के आगे जीत है जो बोलते हैं ना, ऐसा माहौल है. तो ऑटो, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आपको लग रहा है wherever you are seeing, I mean even the resurgent financial sector, capital market sector, wherever there is earnings revival, earnings are doing well, and prices are reasonable, and markets are apprehensive, and hence stocks are available at reasonable prices.
I think that's where you should include in portfolio. अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज और कम वैल्यूएशन पर जो एक कॉम्बिनेशन अब आजकल मिल रहा है, पहले नहीं मिल रहा था 2 साल पहले नहीं मिल रहा था, वही बोल रहा हूँ। तो अभी क्या है, जो करेक्शन हुआ है उसमें काफ़ी, इंडेक्स में तो करेक्शन 10% ही हुआ है, बट इन इंडिविजुअल स्टॉक्स करेक्शंस आर क्वाइट डीप, एंड नाउ IPO मार्केट इज आल्सो डेड, सो क्लियरली यू नो द वैल्यूएशंस हैव बिकम मच मोर रीजनेबल, एंड आई मीन इन्वेस्टिंग climate is very good, with a very big uncertainty for the next 1 quarter, 2 quarters, but the longer term is looking much more brighter. लॉन्गर टर्म इज लुकिंग मच मोर ब्राइटर। आपने फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की, आपके खुद के नंबर्स काफी शानदार हैं। हम उसके बारे में बात नहीं की आज। नहीं, ऑपरेटिंग नंबर्स नहीं, मैं बात करने वाला था। आपके ऑपरेटिंग नंबर्स काफी शानदार हैं। Yes. एक MTM का थोड़ा सा लॉस आपने पूरा वो बुक किया, तो परमानेंट नाटक है वो। हाँ। तो उसकी वजह से लेकिन थोड़ा सा बॉटम लाइन पर हल्का सा इम्पैक्ट आ गया, लेकिन अदरवाइज होते रहेगा ना। मतलब सी, I mean, you have now 10,000 crores, 10,000 crores treasury. If the market goes down by 10%, we will lose 2,000 crores. Market goes up by 10%, we make 2,000 crores or maybe 2,500 crores. So, so that what that does? See, one is the operating. I can control the operating. I can't control the market. So, operating wise, see, you must judge the management on operating basis. बिल्कुल. My operating is up from 2,000 to 2,500 crores. 2,400 crores. So we have done exceedingly well in the Q4. Most important is Q4 is 25% up, and for the year we are 16% up. So I think we have done very well, and operating, and that is what that shows the boom in the capital market, because Motilal Oswal is a anti-fragile kind of a company, because we have put our bets on broking, asset management, capital market, private equity everywhere, and so every year, 2 or 3 out of 6 businesses, 2 or 3 businesses are in boom condition, 2, 3 are slightly in slow mode. Because of the regulatory headwind last year, the retail broking, which is the mother kind of a business, Yes. that saw the stress. I think profit is down by about 7, 8, 10% for the year. But हाउसिंग अच्छा किया आपने इस but housing has done very well. 25-30%. Wealth? Wealth has done very well. Yes. AMC is boomed. Commodities. Private equity has done very well. We have raised so much of money. Now we are advising about 6.5 lakh crores, which is growing at about 20%, 25%. So it's not that my company is only growing. If you look all across the capital market, पूरी स्पेस में yeah, only thing is that we are kind of एक छतरी के नीचे सब है, तो you know something does well this time, something does well that time. So we have tried to create a company which thrives little slower pace than the market, but thrives every year. आपके ऑफिस आया था लास्ट टाइम, वो पूरा रेनोवेशन चल रहा था, आपने कहा था ऐसे कई टावर बना रहे हैं। वैसे आपका वो जो गोरेगांव मलाड वाला है वो रिडेवलपमेंट में जा रहा है ना? I don't know. But we have done already 4. I think we must do some program from Ahmedabad. Ahmedabad tower is beautiful. Bangalore is beautiful. Delhi is under construction. But we will finally do. I mean, right now the plan is 10. We should be able to execute that. But that makes presence in those cities, because we think like every city, every state in next 8-10 years they will become very large capital markets. Very large capital. We are going to be the most crowded capital market in the world. We are already 225 million demat accounts. We are headed towards 500 million in next 7-8 years. By that time, all the 10 towers should be functional. Okay. तो इस समय अगर आप मोतीलाल ओसवाल की बात करें, जो पिछले 7-8 साल की हमने ग्रोथ देखी है, आप उसी तरीके से देखते हैं? क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सेक्टर ने एक्चुअली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट किए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो क्या ऑपरेटिंग नंबर की बात करते हैं, MTM वगैरह को भूल जाते हैं, ऑपरेटिंग नंबर्स में इसी तरीके की Anuj, I'll tell you frankly, businesses, see, there is a business and there is a businessman. So we have been working for last 40 years relentlessly. बिल्कुल 10 घंटा हम लोग अभी भी काम करते हैं, जिसमें 23 घंटे तो मैंने देखा है। हाँ, तो हम काम करते हैं, समझ, उसमें कोई नहीं, वो मजा है। वी आर वेरी हैप्पी टू वर्क। द इशू इज हाउ इज द टेलविंड, विच इज नॉट इन माई हैंड। टेलविंड इज मैसिव। इन माई 30-40 years, 35 years also had tailwind, but it was very mild. But for last 5 years, tailwind is a different level altogether. 10 years back, we used to make about 250-300 crores profit. This year, operating profit is 2,500 crores. 10 गुना हो चुका है। 10 गुना हो गया। आप देखिए ना, आप जाके देखो आप। So it has grown at, you look at my ratios, we have grown in last 10 years at 27% top line, 33% bottom line compounded. Now, when I want to see next 10 years, I also see those numbers only. I don't have any way to figure out how big we will become in next 10 years. See, today IT is facing headwind. Okay,
in 95, 97, they were the most tailwinded sector. Today, energy transition is facing biggest tailwind. You know, all the transformer companies, your all the module companies, they are having massive tailwind. All the auto companies, they have tailwind. But IT has a headwind. So like that, capital market, I think, not only had a wonderful last 5 years, the next 5-10 years will be even more exciting. Okay. Even more exciting, and not in terms of percentage will be almost same, but on a much larger base. So the opportunity is so massive that it actually there is no competitive pressure in the sense that रामदेव जी कह रहे हैं कि यहाँ से भी 10 गुना प्रॉफिट बढ़ सकता है अगर 10 गुना आपने देखिए बढ़ाया ऐसा हुआ है ना, मुझे लगता है that potential is there. That potential is there. Whether we can execute or not, that is on the management. That's why what is important to see in this result is that we have been adjudged the top 25 great place to work. Our focus on the entire talent management is extremely high. You know how we give a SOP and all, how many people have made money. And so we want to create a place where we get unfair talent advantage. The best of the people should come and should be happy to work with us and take the brand to different level. I mean, I want to see the brands of those individuals to be bigger than the brand of the company itself. बहुत बड़ी बात कही है आपने. मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन किया है. रामदेव जी, आपने आईटी की बात कही अभी. आईटी की क्या स्टोरी फिनिश हो रही है? आप एज एन इन्वेस्टर क्या व्यू ले रहे हैं? मैं पूरा नहीं पढ़ पाया आज. इन्फोसिस सलील का मेरे ख्याल से पूरा इंटरव्यू था. आई थिंक वी हैव टू कीप लिसनिंग टू ऑनेस्ट CEOs because they are listed, so they can't be as what do you call 100% honest at times, but you have to keep listening to them what they are saying, because the legacy, because ultimately what has happened is headcount driven model, headcount growth model is thing of past. So they have to be very modest in, if at all they can grow, the growth in the headcount will be very modest, but the yield per person, I think this is a new era of Indian IT mere khayal se. Okay. If at all it has to happen, it will happen. There is no more young guys anywhere, so it will all happen here. So my sense is a new era where the yield per employee has to see at 10% kind of growth every year rather than 8-10% growth in the number of people. Okay. And which is what is a complete shift in the model, and that is it is very destabilizing for the analysts to figure out whether we will be able to actually grow the productivity per person going forward. नहीं, बट आप ले रहे हैं कि नहीं यहाँ पर बेट आईटी? No, I don't, as I said, headwinded, tailwinded. तो इस समय हेडविंड है तो इसके लिए आप हाँ, हेड मतलब हमको 95 में तो we made biggest money ना. हाँ बिल्कुल. My 40% of more, I put 2.5% in Infosys, became 40% of my portfolio in 5 years. Oh wow. That is the power of tailwind. Wow, seriously. गधे भी मतलब भगवान दिखते हैं. नहीं, और यही टेलविंड आपने पिछले 2-3 सालों में प्लेटफॉर्म कंपनीज के लिए कही है. Yeah. So wherever there is a tailwind, see now the size of the tailwind. Globally, world is very wealthy. So the tailwinds are going to be massive. And India is also very large. We are now $4-5 trillion kind of market. The thing in next 7 years will become 10 trillion. So the extent of tailwind size, the winners and losers will be massive in size. रामदेव सर, एक सवाल मेरा ये है कि फिर FIIs क्यों नहीं आ रही है हमारी मार्केट में, और उनको क्या नाराजगी है? क्यों रिटर्न नहीं बन रहा? क्या यही है, टैक्स हाई हो गया, ये है, या कुछ और है? वो सब इशू है, लेकिन बेसिकली इंडिया इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द रीजनल मार्केट्स. सो फर्स्ट थिंग इज मनी इज नॉट कमिंग टू एमर्जिंग मार्केट्स पर से, because the US has done so well. I mean, brilliant country, US. I mean, the way they have done. Lifetime high लग रहा है. So वो एक problem है. So there is not enough flow coming from developed market to developing market. Second, within developing market, China, Korea and all, they have the what you call AI stories, which we don't have. Third, they're actually cheaper, significantly cheaper even now. They don't have a history of creating wealth as much as India has created. If you see 40-50 year story of Korea and China and all, they have nothing to even show in terms of index movement. Okay, but I mean, market is all about what's going to happen in next quarter or next year. So their story looks to be stronger. Fourth, I would say that Indian inflow has been so massive, and the arbitraging force is only between India and rest of the region. The arbitraging force is only FIs. If India is higher, we become funding market for rest of the world. Okay, so what is important is that we have to open the floodgates on the domestic side also. They have to allow our mutual funds and all to invest on ETFs or indices worldwide, so that
the domestics they will have a choice of investing $100 million in domestic companies or say $50 million or $25 million in global companies. So it will do two things. One, it will arbitrage between the world and us, so the water level will be same, valuation will be same. Done by whom? Domestic investors. Rather than I'm losing two things. One, my money is going, and second, my image is also going very bad. And currency is under pressure because I'm not opening the domestic flow. So yes, there will be some pressure because of, not in this point of time, but at some point of time, regulators must think to allow domestics also to invest in a calibrated fashion in the global markets. ओके मतलब सिर्फ गिफ्ट निफ्टी वगैरह नहीं, एक डायरेक्ट वो इन्वेस्टिंग तो बहुत फ्रैक्शन वाला है, उसमें LRS खोलो, ये करो, वगैरह वो सब करो। अरे यहाँ पर ETFs है ना, यहाँ पर आपको खरीदने के तो हमारे जो नास्डैक इंडेक्स फंड है, और नास्डैक ETF ने जबरदस्त रिटर्न जनरेट बहुत रिटर्न, बेस्ट रिटर्न, क्योंकि डॉलर रुपी का भी so we are impact है। depriving the domestic investors also of the international possibility. And as we become bigger from 5 trillion to 10, 20, 30, you can't remain only in India. I mean, we cannot be that selfish to say that we'll allow the foreigners to come in, but will not allow us to go out. ओके, आखिरी सवाल, और क्योंकि आपके खुद के नंबर्स इतने शानदार रहे, कैपिटल मार्केट एज अ थीम इज बूमिंग इस देश में। कोविड के बाद बहुत लोग आए इस मार्केट में जिन्होंने बहुत शानदार रिटर्न्स देखे। उनमें से बहुत लोगों की कंप्लेन है कि शायद पिछले 2-2.5 साल से रिटर्न्स नहीं बने हैं। लेकिन अगर हम 10 या 15 साल का एक व्यू लें, आप फेयरली कॉन्फिडेंट है कि जिस लेवल की कंपाउंडिंग मार्केट ने पहले दिखाई है, आगे वैसी कंपाउंडिंग होगी? Corrected market is the best time to start, I'm telling you. Okay. You buy at 26,000, you buy at 22,000. I wish, I mean, it doesn't suit at 24,000 to say 22,000, but lower the, see, countries compound, we are nobody. We have to only look at the data. At what rate country has grown or indices have done. They have done, तो 6 साल में आपका डबल हो जाएगा। तो अभी आप 26 में 32 में आपको पक्का 50,000 का इंडेक्स हो जाएगा। 50,000 का इंडेक्स, हाँ, वो मेरे को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, उससे पहले बीच में 22 आ जाए, 23 आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में 50,000 का व्यू है। 24 है वाला 12,000 भी आ सकता है। आई हैव सीन 50-60% करेक्शंस आल्सो। कोविड में हुई थी। भाई आपका 200 अभी $120 का ऑयल है। आई मीन इफ यू कीप दिस चोक ऑन, इट कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ chaos. So what I'm saying is we don't know what are the short term movements, but the longer run all the problems get sorted. All these problems of Hormuz and all will all get sorted. We'll have waterfall, we'll have good days also, but right now we are challenging days. बिल्कुल। रामदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ आए, इतना टाइम